Hi friends, hello everyone. So my name is Shweta. You already, in my last video, I already told about what about myself. So I would like to give a brief introduction. My name is Shweta, and I have a good experience, good amount of years of experience for preparing students for IELTS and OET. So yes, so now moving on here. So in the last video, I talked about the structure, very basic overview I gave you. So today we will be discussing about the writing section more. And I will also show you how actually we do it, what all actual are the, parameters which are very much necessary when you are doing the writing section. Okay. So let's start with the writing section because this is one wherein, you have to just write a letter. So what you will get is you will get a good amount, a good questions in which you will be getting a good amount of case notes, and you have to convert those case notes into a meaningful and a proper sentences. As in, it should be very well understood by the to the by the to whom you're writing, and it should be understood to the intended reader as in who will be reading it. Okay, so it should not be much complex, but yes, which have to be very factual, and you got to write the things in a clinical way, because this is you are writing a medical letter, not you're not writing to your friend that you have to write all the storylines and everything. So case notes are given, and you have to actually decide that which of these case notes are very much relevant and very much necessary for the intended reader to understand that, okay, fine, this is the brief of the patient and very meaningful and very effective. Okay, so I'll be now sharing my screen, and let me tell you, I do train the students as well. One-to-one training can be given. So if you want to train with me, we can, you can, in the end of this video, I will share with you the details and everything. I mean, you can also comment and tell me if you want to take classes with me. Okay, so now let's start. Okay, so what we're going to do here is we are taking example of a nursing task actually here. Okay, so I don't know if it is very much visible to you. Let me just zoom it. Might take some time. Sometimes it's not responding. So so letter is something, if you can, we will be discussing the instructions also, because I've seen many of the students think that, okay, fine, we have read the question, we understood it. So you have to understand, actually you have to understand these instructions as well. So let's start with this occupational English test, that is your OET. Okay, now this is your writing subtest. Okay, you have 4 module if you remember OET. You have 4 module: writing, reading, listening, and speaking. So this is the writing subtest for nursing. Time allowed is reading time is 5 minutes and writing time is 45 minutes. So in total, actually, you will be given, in total, you will be given 45 minutes. So out of that 45 minutes, 5 minutes you have for reading. So you have to give a quick and a good reading to the question. And before the question, you have to read the instruction. What is the instruction? So you're actually, this is the instruction. If you can see here, read the case notes and complete the writing task. And then you will be given in the end the question that actually what you have to do. Okay, so writing section is of 45 minutes. You are given good 5 minutes for reading. That means you have to read the question very thoroughly. Okay, and 40 minutes is given for writing the letter. And I'll tell you, many students ask me, ma'am, some of them have switched from OET to IELTS also, that IELTS is quite easy and all that. But I would say that, between IELTS and OET, if you're from medical profession, if you're from nursing background, even if you're from, if you are a dental surgeon, if you're a dentist, or any field of, if you are from healthcare, domain, but please give OET. If you want to move to another country, if you want to move to the English speaking country, please prepare for OET, because this actually have a context of healthcare, okay, which can actually help you to prepare for it, rather than I don't know if IELTS is also, I would not say IELTS is not easy, but IELTS is very dynamic. Every year it changes, the question paper changes.
I would say the question pattern sometime also, not pattern, but the types of questions and everything changes. But here, what you will get in first, you only the disease name will change, the conditions will change, and since you are from that background, you're very versed with. Okay, but yeah, there are some situations. I have certain students also who were coming from the regional background, as in उन लोगों ने हिंदी पढ़ा है, उन लोगों ने मराठी पढ़ा है, उन लोगों ने तेलुगु पढ़ा है, तमिल पढ़ा है, मलयालम पढ़ा है. So there's an issue there with them. So that's not an issue. आप क्या कर सकते हो, आप बेसिक क्लासेस ले सकते हो, जिसको आप कहते हो ग्रामर क्लासेस. So I provide grammar classes as well, because I'm a Canada board certified trainer. So so you can prepare for the grammar, and that is specific related to OET only. As in in the writing task you have to most of the time आपको passive में लिखना होता है. Okay, you have to use the passive voice. तो वही है कि उसमें फिर उसी तरह से तैयारी होती है. Okay, then how you will be converting the sentence into passive voice, and when you are using since, for, and when you are using these time markers since and for, so when you will be using it, आपको कब use करना है. ठीक है. So now look at the question. Enough of all those talking. Now look at the screen here. So you are given a good reading time of 5 minutes. So please आप उसमें it's just said that, I mean, I will tell you, you don't have to pick up the pencil because sometime आपको suspend भी कर सकते हैं एग्जाम से. So आप pencil मत उठाइए. वो 5 मिनट you give all your time to reading the question only. रादर देन कि आप उसको बार बार आप सोचे कि अरे मैंने पढ़ लिया, 3 मिनट में पढ़ लिया, मुझे समझ आ गया. नहीं, ऐसा नहीं होता. It doesn't work like that. You are given 5 minutes, give a good 5 minutes. Okay, because अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. I'll be discussing what are the 5 parameters which are very much necessary. ठीक है. So when you are given a good reading time for 5 minutes, go through the question very thoroughly. I mean, आप instruction पढ़िए, then I'll go to the task and try to understand. और फिर आप एक structure, you have to kind of make a structure in your mind कि how I will be writing, how the structure of the letter would be. ठीक है. So now if you can see here, read the case notes and complete the writing task which was. So writing time is 40 minutes. That's enough time for you to write. And you have to read the case notes, complete the writing task which follows. So at the end of the case notes, when the case notes end, खत्म होगा, तो नीचे वहां पे फिर आपको वो दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा. Okay, that's your task. So okay, so these are the notes, these are the case notes. So assume that today's date is 10 February 2019. So you are writing the letter on this date. Okay, you are a nurse, you have to write the letter. You are writing, this is the top of it, which will be आपके टॉप ऑफ द लेटर में आएगा. वो हम स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर करेंगे बाद में. तो 10 February 2019. Mr. Lanan Ramamurthy, a 63-year-old, is a patient in the medical ward of which you are charge nurse. So आप charge nurse, so you are the charge nurse and he is a 63-year-old patient there. Okay, so the hospital is Newton Public Hospital. Patient की डिटेल दी गई है. Okay, so he is resident of Community Retirement Home, Newton. Okay, so he is in the same city and he reside in Community Retirement Home, means वहां रहते हैं. Okay, so about they have given information. Jake engineer Sean about his his children. Now admission date दी है when he was admitted and discharge date. So आप आज का date 10 February when you are writing the letter, he is discharging tomorrow. It is 11 Feb. और diagnosis है, उन्हें pneumonia हुआ है. Okay, now past medical history है और osteoarthritis mainly fingers में है. Eyesight है due to cataracts removed 16 months ago. Eyesight weak है, needs checkup. Social background दिया हुआ है, medical history दी हुई है. Okay, retired school teacher है, financially independent है, lonely since wife died, weight loss दिया हुआ है, and medical history type 2 diabetes है उन्हें. 4 March chronic obstructive pulmonary disease diagnosed हुई थी. And medical background, as in when he was admitted. So this is something medical background जब उन्हें admit किया गया था. When he was admitted, he had pneumonia. He has acute shortness of breath, inspiratory and expiratory wheezing, persistent cough, chest and abdominal pain, fever, rigor, sleepless and generalized ache. On admission, mobilizing with pickup frame, assist with ADLs. ADLs होते हैं, activity of daily life. Okay. तो आपको क्या करना होता है ना, ये आपको जैसे दिया हुआ है, ये सारी केस नोट्स है, ये पूरा का पूरा उठा के एज इट इज से लिखना है. यू हैव टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंसेस, काइंड ऑफ समराइज इट. आपको इसे समराइज करके लिखना होता है.
पहले आप सेंटेंस बनाओगे, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि विच ऑफ दीज समटाइम द सिम्टम्स आर सेम, तो दे काइंड ऑफ यूज उन्होंने सिनोनिम्स दिए होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू शुड नो दैट दिस इज द जो मुझे लिखना है इसमें. ओके, आई मीन इफ दे आर द मीनिंग आर सेम देन आई कैन यूज वन ऑफ दीज. ओके, नेक्स्ट उनका मेडिकल प्रोग्रेस बताया हुआ. व्हेन ही वाज एडमिटेड दिस वाज द मेडिकल कंडीशन, एंड नाउ व्हेन ही इज व्हाट इज हिज एक्चुअली प्रोग्रेस. So his inflammatory markers are back to normal. He's slow but independent walk and shower. And dry cough. Thoda, there is amount of chest pain. There's been a good amount of weight gain after referring him to the dietitian. Now nursing management hai. So this is all the things that you have to take care of him. So his assessment is he has shown good progress. So that means post admission and post his recovery is good. His recovery, I would say that he was admitted there, he was treated there. So post treatment recovery is very good. He has shown good progress, and that he has to encourage. One have to encourage chest physio. Okay, and this is the discharge plan. So discharge plan is something why you are writing the letter while you are writing. So दूसरी countries में, foreign countries में, it's very prevalent that you are writing. जब आप लेटर लिखते हो तो आप उनके जीपी को लिखते हो, या वो जहां से आए हैं वहां लिखते हो. तो वहां पे you have to kind of write the discharge plan as well. Okay, and let me tell you, there are I forgot to tell you in the starting, there are three types of letters. You have transfer letter, you have refer letter, okay, and you have discharge letter. So this is kind of a discharge letter only. पर मोस्टली जब हम फर्स्ट टाइम किसी को रेफर करते हैं तो वो रेफरल होता है. जब आप मेरे पास पेशेंट आए जीपी के पास एंड आई एम सेंडिंग हिम टू अ स्पेशलिस्ट और हॉस्पिटल, तो वो हो जाएगा फर्स्ट टाइम रेफर, तो हम रेफर कहते हैं. सपोज मैं यहाँ पे जीपी हूँ, या यहाँ पे कोई मेडिकल सेंटर के पास पेशेंट आया है, या किसी रिटायरमेंट होम से आया है और उसको रेफर किया है हॉस्पिटल को. ठीक है, अब हॉस्पिटल ने अपना काम कर दिया, देख जैसे इस केस पर उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया, अब वो वापस पेशेंट को भेज रहे हैं. सो दैट इज काइंड ऑफ रेफर बैक, मीन्स रेफर बैक या फिर ट्रांसफर, क्योंकि हॉस्पिटल का काम हो गया. when there is a temporary refer, that is kind of you रेफर का मतलब होता है कि आपने पेशेंट को रेफर किया तो वो वापस आएगा. अभी यू हैव स्टिल हैव द कंट्रोल. व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग, दैट मींस यू आर एक्चुअली you have done with all the treatment everything. Now you are you are not, the patient is not under you actually. अब वो आपके अंडर नहीं है, अब आपने उसे भेज दिया, आपका काम हो गया. So this is kind of that. तो इसमें क्या है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन आपको डिस्चार्ज लेटर लिखना है मिस जॉर्जीन पॉन्सफोर्ड को, who is resident nurse at the community retirement home. So this is the same place जहाँ पे Lana and this patient lives, and you are writing the letter to the resident community nurse there. Okay, तो means ये patient वहीं से आया था and now he's going back there. So that is the update letter. तो आप कैसे लिख सकते हो, ये कह सकते हो आप refer back है. Okay, it's a kind of transfer only, क्योंकि हॉस्पिटल ने अपना काम कर दिया और भेज दिया कि चलो हमारा हो गया. Now the patient is now no more under us. Now he is being transferred to York here. He is being referred back. ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज लेटर, कि रेफर बैक हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, अपडेट एक तरह से. व्हेन यू आर राइटिंग, आई एम राइटिंग टू अपडेट. ओके, सो इसमें आपको करना क्या है, दिस लेटर विल अकम्पनी मिस्टर रामामूर्ति बैक टू द रिटायरमेंट होम अपॉन हिज डिस्चार्ज टुमारो. एक्सपैंड द रिलेवेंट नोट्स इनटू कंप्लीट सेंटेंसेस. तो आपको कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं. डू नॉट यूज अ नोट फॉर्म. आपको केस नोट्स नहीं यूज करने. ओके, केस नोट्स नहीं यूज करने मतलब केस नोट वाला फॉर्म नहीं यूज करना है, कॉमा डाल के आप बिकॉज यू हैव टू राइट द प्रॉपर सेंटेंसेस, because you have to make the intended reader, that person who is reading the letter should be able to understand, right? So उसके बाद जो next thing है, use the letter format. Of course हम format भी पढ़ेंगे. The body of the letter should be approximately 180 to 200. तो 40 minutes में 180 to 200 words you have to write. Now there are certain things that I would like you to note down here, कि actually क्या-क्या parameters होते हैं when you are actually writing the letter. That was my last letter actually. We keep discussing with the students, so writing के 5 parameters. Parameters क्या होते हैं actually? Parameters are something on the basis of which you are examined, you are assessed. Okay, so 5 parameters हैं writing के. Okay, so number 1 है आपका content. See, your content should be very relevant. It should be very meaningful. Okay,
एक्चुअली आई वुड से रिलेवेंट कंटेंट लिखना है। रिलेवेंट क्या होता है? रिलेवेंट है कि जो आपको इतने सारे केस नोट्स अभी आपने देखा दिया है, सो दोस्त उस केस नोट्स में से आप स्पेलिंग मिस्टेक आप यू कैन काइंड ऑफ do I mean there will be some kind of sometime it happens, तो आप उसे डिसमिस कर दीजिए। सो कंटेंट होता है कि रिलेवेंट, आप सारा तो नहीं लिख सकते ना। 80 180 से 200 वर्ड्स दिया तो यू कैन नॉट बी राइटिंग द होल ऑल द केस नोट्स में एक एक नोट बना के लिख दूंगी। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिसको मैं लेटर लिख रही हूँ उसके लिए क्या क्या जरूरी है समझना। ठीक है? तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन पहले तो आपका ये समझना जरूरी है इंट्रोडक्शन में कि क्यों आप लेटर लिख रहे हो, ताकि उसको एक इमीडिएट मैसेज चले जाए। ठीक है? उसके बाद आपका कंटेंट आता है कि आप कैसे उसे स्ट्रक्चर करोगे। ठीक है? सो कंटेंट आगे रिलेवेंट कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उठाने हैं केस नोट से, हमको समराइज करके वो लिखना है। हम आलतू फालतू कुछ भी नहीं लिखेंगे उसमें। नेक्स्ट हमारा आता है पर्पस। पर्पस होता है आपका इंट्रो, इमीडिएट मैसेज जो हम देते हैं, फर्स्ट लिखते हैं जो हम। ठीक है? दैट इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें आप इमीडिएट मैसेज देते हो इंटेंट जो रीडर है कि क्यों आप लिख रहे हो। ठीक है? पहला ये होता है आप क्यों लिख रहे हो, आप ये बताते हो आई एम राइटिंग टू रेफर, आई एम राइटिंग टू ट्रांसफर, आई एम राइटिंग टू अपडेट। ठीक है? तो आप यहाँ पे प्रॉपरली उन्हें बता देते हो कि आप क्यों लिख रहे हो। तो दैट इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। द थर्ड वन इज योर स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर। ठीक है? जिसको हम बोलते हैं लेटर का स्ट्रक्चर, लेटर का लेआउट सही होना चाहिए। आप लेटर लिख रहे हो तो प्रॉपर पैराग्राफ्स होने चाहिए। दैट आई विल टेल यू, जैसे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। सो उसका प्रॉपर लेआउट होता है। फिर पर्पस लिखते हो, दैट इज इंट्रोडक्शन। बॉडी पैराग्राफ 1 होता है, बॉडी पैराग्राफ 2 होता है, देन एंडिंग क्लोजिंग नोट्स होते हैं। फिर उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आता है। तो वो आपको कैसे लिखना है, फर्स्ट आपका डेट आती है, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट आता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ओके, रिगार्डिंग इन्फो आता है, दैट वी विल डिस्कस। सो दैट इज द प्रॉपर लेआउट और स्ट्रक्चर वी से। द फोर्थ वन इज एक्चुअली द टोन। टोन क्या होता है ना, टोन होता है कि यू हैव टू हैव द एटीट्यूड। इट मींस आपका एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग द लेटर। प्लीज, काइंडली, दीज आर द सर्टेन कीवर्ड्स दैट यू यूज। आप किसी को कमांड नहीं कर रहे हो, आप उन्हें बता रहे हो। ठीक है? आप एक तरह से उन्हें एक रिस्पेक्टफुल उसके साथ आप बता रहे हो कि ओके दिस इज सो एंड सो पेशेंट, I would be highly obliged if you kind of, it would be highly appreciated if you can take care of this patient. Okay, एंड द फिफ्थ वन इज योर लैंग्वेज। सो लैंग्वेज में क्या था, देखो सबसे पहली बात, ये टेस्ट आपके प्रोफेशन का तो होता नहीं है, बट द कॉन्टेक्स्ट इज टेकन फ्रॉम योर प्रोफेशन ओनली, दैट इज अ मेडिकल बैकग्राउंड। तो आपको लैंग्वेज पर ये बेसिकली ये लैंग्वेज का ही टेस्ट है। दिस इज योर लैंग्वेज टेस्ट। सो व्हाट दे चेक इज योर वोकैब। इसमें वोकैबलरी इतनी हाई फाई तो होगी नहीं, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट मेडिकल टर्म्स। तो आपको ऐसे भी मेडिकल जार्गन समझ नहीं करने की समझ ही ना आएगा। ओके, vocabulary, punctuation is very important when you are writing the letter. Okay, then there is punctuation, there is vocabulary, there is grammar. Grammar is the most important. तो अगर अब जब पेशेंट एडमिट हुआ था, तो अगर आप वो सब प्रेजेंट प्रेजेंट में बताओगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। अगर आप डिस्चार्ज प्लान दे रहे हो कि आपको इनका आगे क्या क्या ध्यान रखना है पेशेंट का, तो वो फ्यूचर टेंस में आना चाहिए, राइट? The patient will require, okay, the patient will require, will need, kind of this. Okay, so if you have any issues with the grammar, you can contact me, you can comment down. Okay, and then you can I provide one-to-one classes, so we can have the classes. Okay, ये आपके 5 पैरामीटर्स है which are very important, इसके बेसिस पे सारा कुछ डेवलप है। Okay, so I am taking your leave here. ओके गाइस, तो राइटिंग सेक्शन को हम कल आगे फिर कंटिन्यू करेंगे और उसमें बताएंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज 5 पैरामीटर्स वन बाय वन thoroughly. Okay, so this is me, Shweta, signing off. Bye bye and take care, and I hope this video helps you. And if you want to take classes with me, I do provide one-to-one class. You can contact me, write it in the comments below. Okay, if you like this class or not, if you like this video or not. और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाती हूँ, so you will not have any problem. Take care. Bye.